अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए ख़ास कर बड़े साइज़ वाले किंग फ़िश मंगाए थे। जी हाँ, उसी का ग्रेवी करी बना रहे हैं। जी हाँ, टैमरिंड जूस में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। आज हम लोग किंग फिश करी बना रहे हैं पक्का ट्रेडिशनल वे में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है। पहले हम लोग किंग फिश को कट करके रखे थे और वॉश करे। इसी पे हम लोग टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट ऐड करके रखेंगे। इन सारे पीसेस को हम लोग टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर अच्छी तरह अप्लाई करे बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। अब हम लोग मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बॉल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। फर्स्ट हम लोग इसमें फेनुग्रीक सीड्स ऐड करेंगे, मेथी।
इमीडिएटली हम लोग इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। फाइनली चॉप्ड गार्लिक इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा पकते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। फाइनली चॉप्ड टमाटोस भी इसमें ही डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम लोग फिश पीसेस पे अप्लाई करके रखे थे। गरम मसाला के साथ साथ हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें टैमरिंड जूस भी डालेंगे। फिश ऐड करने से पहले ही हम लोग इसमें फिश मसाला ऐड करेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह बॉईल होने तक हम लोग इसको लिड क्लोज करके रखेंगे। रेसिपी परफेक्टली बन गया है, बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। फाइनली इसमें हम लोग चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे।
वीडियो देखते ही आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। उसके वजह से और भी बच्चे फ़ायदेमंद हो सकते हैं और पेट भर खाना भी मिल सकता है। हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए, या मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे Nawabs_kitchen 786 पे फॉलो करिए, और हमारे टीम के लिए भी दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।